Hello, everyone. I'm Dr. Dutt, and I would like to welcome you to this Facebook Live event at Dr. Dutt Children's Hospital. Uh, last 2 months have been really horrendous. Our country has experienced such a pandemic never before. We saw, I'm sure, everyone in India is directly or indirectly being affected by this disease. Whether you interfaced it directly, like somebody in the family got COVID or somebody died of COVID. So whether you had the disease or not, you have experienced this problem. And thankfully now, as we are coming to the downhill part of the second wave, at least, cases are going down, things are getting better, but it has left its scar. चोट लगी है, उसके बाद निशान छोड़ गए हैं. Mental and physical problems are coming up in COVID-19, post-COVID-19. And we have just organized this event so that we can all interact with you, people who have come across this disease. And if you have any questions, we will appreciate it and we will try to answer it. With this, I would like to welcome our guest speaker today, Dr. Meghna. She is an excellent psychologist and psychotherapist. I can't have any praises for her. As far as experience goes, she's a great person. She has done her PhD in psychology in NIMHANS, a postdoctorate from University of Queensland in Australia, has a vast experience. I can't even tell you, it is like more than 15 years of experience, thousands of hours of therapy with kids and sessions, has written many articles, even a book. And she's just amazing and an internationally certified positive parenting coach. Welcome, Dr. Meghna. Can you hear me? Thank you so much. Thank you, Dr. Shantanu. I'm honored to be here. That was really, truly a spectacular welcome. Thank you so much. So let me start with the physical aspects, which we call long COVID. This is a new term which is coming up as more and more people are experiencing and going through the disease. Initially, we used to think that once you get COVID, you are fine. Bimari ho gayi, ab hum theek ho gaye, we can do anything. That is true for some cases, but not all. The problem is now occurring is that after the COVID is over, there are a lot of sequelae or problems which are occurring later on, as long as even 12 to 16 weeks. Especially we have American data which has shown that parents and in kids and even adults, what they are experiencing is chronic fatigue. That is one of the most common problems the patients are facing. Like I know people post like 2 months, 3 months, even 4 months, they are complaining to me and they're saying कि sir बहुत थकान होती है. So our child was very active before, now he's like lying on the bed. He's fine, there is no fever, nothing, but he's fine, but he's very fatigued. Second, which we are seeing in adolescent and even adults, is breathlessness and on exertion. So if the child is, they say ki, like stairs climb karega and suddenly will feel very breathless. Even adults are experiencing that. Third is chronic fatigue. Third is feeling the tightness of the chest. So a lot of parents have told me that our kids also complain and we also are experiencing. Sometimes we feel very like we have to exert and breathe with forcefulness because it is becoming very difficult. सांस लेने में दिक्कत पड़ती है. ऐसा लगता है कि जैसे कोई obstruction सा हो रहा है. Third is brain fog. Simple चीजें, daily चीजें भूल जाते हैं. चाबी कहाँ रखी थी, वो कहाँ था, like अभी याद था, just भूल गए. ठीक है ना? So that is happening a lot. Long term memory is fine. Short term memory में lapses होते हैं. याद आता है, भूल जाते हैं, याद आता है, भूल जाता है. Parents sometimes are pressuring their kids कि सर इसकी performance school की बिल्कुल बेकार हो गई है. Online वैसे ही बहुत दिक्कत होती है learning में, and then it is becoming more difficult. So that is one thing which we are experiencing. Third is loss of taste and smell. Approximately 13% adults and बच्चों को मिला के they experienced loss of taste and smell. And it is very important to know that the taste was altered for more than 3 to 4 months. That is a very long time. Third is experiencing tachycardia, मतलब heart rate बढ़ गया. मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं कि सर इसका क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर है, they can measure it, ऑनलाइन जाके चेक भी कर सकते हैं कि एक्चुअल हार्ट रेट कितना होना चाहिए बच्चे का. So they come back and then they say कि अरे इसका हार्ट रेट बहुत हाई है, बच्चे को जो है हम लोग like जब भी नापते हैं 120, 130 आता है, which is actually higher.
sleeping के time ठीक है, again बढ़ जाता है. So this is there with COVID. It actually affects the heart directly also, because so much antibody production is there. The antibodies interact with the heart muscles and make them little weak, and because of that there is tachycardia which happens. So this is fine. Thankfully, what happens is that this is temporary, and normally it goes away after some time. So that is an excellent thing, because we don't have to worry about it. Third is what we are experiencing now is psychological problems. Both in the parents and the family, they are now experiencing psychological problems. So what is happening is that some kids are having difficulty sleeping. Some parents have difficulty concentrating. And then there are problems, especially in families who have suffered a loss, that sometimes the child is not eating, the child has stopped interacting with the family, is very quiet. And it is very important to address these issues. Along with physical issues, we need to address the mental issues also, because during that child's, like, he's like just getting up, his mental development is happening. Any scar which is left right now can turn up to be a very big problem later on in life. हमें लगे बच्चा है, कोई बात नहीं, भूल जाएगा, हो गया, कोई बात नहीं, हम उसे distract कर देंगे. We have to address it. Especially we are having like deaths in the family, they need to be addressed. You can't just hide it under the rug कि चलो भूल जाएंगे, नहीं बात करेंगे, चुप रहेंगे, बच्चा भूल जाएगा, ठीक हो जाएगा. They can leave the scars forever in life. So with this, I will ask Dr. Meghna to talk about some aspects of mental health in children, especially post-COVID. Yeah. Thanks, Dr. Shantanu, again for having me here. I think आपने बहुत अच्छे points बताए physical health के बारे में. But जब हम physical health के बारे में बात करते हैं, we forget addressing mental health. And I think I would like to take this opportunity to address mental health in the wake of COVID, because as you said, चाहे आपको कोविड हुआ है चाहे नहीं, आपने किसी ना किसी तरह से कोविड से डील किया है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, स्पेशली इन द सेकंड वेव. सो व्हाट इम्पैक्ट इट इज हैविंग ऑन फैमिलीज, व्हाट वी आर सीइंग इज there is a lot of anxiety, there is a lot of depression like symptoms, there is a lot of irritability, there is especially in children, especially in young children who are not able to express their anxiety. See, adults हम लोग बात करके we feel better, but young kids don't have the vocabulary to talk कि वो कैसा feel कर रहे हैं. तो young children में how it looks like, बार बार reassurance seeking, आश्वासन चाहना, क्या सब ठीक हो जाएगा, क्या मेरी दादी ठीक हो जाएगी, क्या वो मर जाएंगे, क्या आप मर जाओगे, क्या मुझे कुछ हो जाएगा. So all of these questions, repeated questions, is an indication of anxiety. Then headaches and stomach ache is also an indication that psychologically also the child is not doing okay. Sleep problems, भूख ना लगना, ठीक से ना सो पाना, clinginess especially a very big behavioral symptom of experiencing the stress and anxiety in kids की मम्मी पापा का हम 24 घंटे घर पे हैं but फिर भी बच्चे पीछा नहीं छोड़ रहे, they just want to, and that is a sign that they want that kind of safety, they want reassurance, they want to feel safe. So all of these issues are predominant right now. We call it COVID anxiety in kids as well as adults, in whole families. And it is very important for parents to catch the signs of these symptoms early and to address them. Now, traditionally, we've always run away from talking about our feelings. We don't know how to talk about, especially our difficult feelings, our painful feelings. And चाहे आपके घर में डेथ हुई है चाहे नहीं हुई है, एक्चुअली ऐसा कोई घर ही नहीं है जहाँ पे हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेथ से डील नहीं किया है. So irrespective of whether you've dealt with death or not, it is very important to talk to your children in age appropriate words and honestly about what is going on, right? So there are two guidelines for talking to children. That one is that you are honest with children. See, information does not scare kids. Information से बच्चों को डर नहीं लगता. What scares kids is being left alone and confused and wondering कि हो क्या रहा है ये. So take time to talk to your children about their feelings, check in regularly about their feelings and give them space to talk कि मुझे डर लग रहा है, उनको don't jump in to reassure them. Normally we say don't worry, सब कुछ ठीक हो जाएगा. No, we don't know कि सब कुछ ठीक होगा या नहीं. Right? So make sure that you don't jump in to reassure your child. Instead, let them talk uninterrupted about their feelings. You talk about your feelings. Keep your communication going. Don't trivialize your child's concerns.
Don't say कि don't worry, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं है and all that. Or don't go the other way also. Because how you deal with your own anxiety is very important. बच्चे हमको देख रहे हैं, हमको observe कर रहे हैं. How we take care of our own mental health, how we cope with our own anxiety is extremely important in modeling healthy ways of coping for our children. So be very, very smart about what you are consuming and the kind of conversations that you are having in your house. आपके घर क्या टीवी ऑन है? आप हमेशा डेथ टोल के बारे में बात करते हैं. आपके घर हमेशा न्यूज़पेपर की न्यूज़ डिस्कस होती रहती है. अच्छा अब लॉकडाउन हो गया, अच्छा अब ये यहाँ पे सामान कम हो गया. I mean, I've had kids who come and tell me their anxiety about अगर स्टोर में खाना खत्म हो गया तो हम क्या खाएंगे? Things like that. Right? So make sure that you are not doing the opposite. You're not modeling your anxiety to your kids. Make sure you're modeling your coping to your kids. Okay, and I can give you a few suggestions, Dr. Dutt, if you permit me, to teach coping skills to your kids, and maybe then we can take some questions. So there are 3 very easy steps, and it is called think, act, and be. Think, act, and be. मैं थोड़ा सा explain करती हूँ what is think, act, and be. It's easy for kids, for parents to remember. Think, act, and be means think का मतलब the first thing that you need to develop in your and in your child's vocabulary is thoughts. कि जो हमारे दिमाग में thoughts आ रहे हैं, not all thoughts are facts. Not all that our mind thinks is based in information, is based in thoughts. So learn to differentiate your fear-based thoughts. See, जब हमको anxiety होती है ना, हमारे thoughts बहुत what if thinking में बदल जाते हैं. What if, क्या अगर, क्या होगा अगर ये हो जाएगा, क्या होगा अगर वो हो जाएगा, जैसे वो बच्चा जो बोल रहा था, क्या होगा अगर सारा फल सब्जी खत्म हो जाएगा, या क्या होगा अगर मेरे नाना मर जाएंगे, या क्या होगा मम्मी पापा अगर मेरे आप लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो बच्चों को सिखाइए कि कैसे हम इस क्या अगर सोच को चैलेंज करें. हाउ कैन वी चैलेंज दिस व्हाट इफ थिंकिंग. सो नॉट एवरीथिंग दैट आवर माइंड थिंक्स इज something that we need to believe. Okay, that's the first thing. The second thing is act. Act means what do we need to do on a daily basis. कि हमको क्या ऐसे actions करने चाहिए जिससे चाहे हमको कोविड हो चुका है चाहे नहीं हुआ है, whatever, we are grounded. We feel, we don't feel, कि हमको anxiety के thoughts आए तो हम उसी wave में बह गए. Grounded means we feel that yes, we have some control over our lives. And for that, there are a couple of things that you can do. Always rely on routines. Whether you are a couple or just a family, or whether you have children in your family, it is very important to have a schedule for your day. चाहे आपके बच्चे की summer vacations हो रही हो, चाहे online classes हो रही हो, have a routine, have a schedule. किस time पे हम क्या करेंगे? It's very important because it gives kids that sense of predictability, safety, and security. And another thing is connecting with nature. I know you cannot step outside, but for whatever it is worth, you can go to your balcony, you can go to your terrace, you can stand and wake up early in the morning, take in the fresh morning air. So connecting with nature is another way that we feel grounded. And the last bit is be matlab how to be present in the present moment, how to be aware of the present moment. And iske liye you can do some mindfulness exercises. Mindfulness का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आप बैठ के meditation करें. Mindfulness means in your even daily activities, doing it with more awareness, without having any kind of judgment about ye acha hai, ye bura hai. No, letting go of judgment about good and bad, and just giving yourself time and space to just be mindfully so. So think, act, and be is what I would recommend for parents and their kids. Excellent, Dr. Meghna. So I am experiencing a lot of things which are like kids are coming. Earlier, I was seeing like last month, I was seeing a lot of patients who were suffering from COVID. Now I am experiencing cases and families who have suffered through COVID. So whether बच्चे को होता है नहीं होता, बच्चा sick होता है नहीं होता, it is a family which is going through COVID. I've always experienced कि किसी individual disease नहीं है, it's a family oriented thing. So what's happening? So I have some things which I want to ask you, and before that I would say excellent thing what you have told. The coping mechanisms are excellent. One thing which I was advising all the parents was कि do not talk. Make the house a COVID-free environment. Do not talk about COVID. While having dinner, do not put the news and keep looking at the numbers and the graphs and everything.
Normally हम लोग सोच रहे होते we are thinking कि okay the बच्चा है 5-year-old, he doesn't know what is deaths. But they absorb everything. They understand everything and they Yeah. can't channel it, and then they get scared and like experience it in a very different way. Yeah. This is important to have a COVID-free environment, like electronics-free environment. Just get on a table, have dinner together, talk to them, play around. I recommend that. Don't talk about COVID and don't discuss COVID, especially in front of kids. Unless the child himself asks. So that is very important. If asking, don't shun him and don't say कि अरे तुम बच्चे हो तुम्हें कुछ नहीं समझ आता. If the child is asking you a question, again remember the 2 guidelines. Answer it honestly and answer it in age-appropriate way. Excellent. Yeah, exactly. So with this, I would like to ask you a couple of things before we go on to the, first of all, anybody who's watching it live, they can put it in the chat, any questions you have, and Dr. Meghna would be happy to answer them. Before we go into the people, the audience who are going to ask the questions, I have a couple of scenarios which I want to go through with you. Sure. The child who is about 5.5, 6 years of age, and they were obviously in lockdown during this pandemic, and he was very close to his grandmother. And everybody got COVID, and as we know, the elder people are more prone, and then she died of the COVID illness, and suddenly. So everything was fine, everybody got illness, and then the child was almost distracted because log admit ho gaye the, the father got admitted, the grandmother got admitted. Wow. And she didn't even had a chance to say goodbye. And the child is now having a lot of difficulty, sleeping difficulties there. He's not eating food. The parents are saying ki wo, matlab, child is fine overall, but like they have noticed that the behavior has become very different. So, and parents came to me and told me directly, like, how should we address this to a 6-year-old? So that is one thing to ask you. Yeah, sure. I think that's a very relevant question, and my heart goes out to families. There are countless families like this, जिसमें grandparents की death हुई है, children, the person that the child is close to, उनकी death हुई है, and parents are at a loss कि हम अपने बच्चे से, अपने young बच्चे से, अपने preschooler से या primary schooler से कैसे बात करें. So the first thing that I would clarify is we actually don't help kids feel better with loss. I know that traditionally we think कि we should try to soothe them and we should. Actually, the thing is that grief, जो grief reaction है, right? Bereavement जिसको हम बोलते हैं, grief का जिस तरह से healing होता है, the process of healing is by processing the event. तो आप सबसे पहले अपने बच्चे को कम्युनिकेट करना सीखें कि हमें उसे डेथ के बारे में कैसे बताना है, एंड वेग स्पष्ट बातें ना करें कि आपकी दादी चली गई, कहाँ चली गई, आपकी दादी स्वर्गवासी हो गई, नहीं. Talk directly, talk honest, in honest way, and again age appropriate way. Aapki dadi mar gayi. I know this sounds hard and heavy, but guess what? Children can take it if you are honest about it. So talk in age appropriate way, talk honestly, and let your child come to you with a lot of questions. अब बहुत तरीके के ग्रीफ रिएक्शंस हो सकते हैं. एक ग्रीफ रिएक्शन आपने डिस्क्राइब किया कि बच्चा फिजिकली इज ओके बट इमोशनली इज नॉट ओके, वो ज्यादा बात नहीं कर रहा है एंड ऑल दैट. एंड फॉर दैट व्हाट आई वुड रेकमेंड इज डोंट लीव द चाइल्ड वंडरिंग. गो टू द चाइल्ड एंड टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स. बेटा आपको क्या फील हो रहा है? मुझे ये फील हो रहा है. अगर बच्चा कुछ नहीं बोलता है तो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स. It's very important that we make space in the family to say कि what, this is a death scenario. This is not okay. We are struggling, and it is okay to say that we are struggling. It is, but we are in this together. See, again, I would like to emphasize here, information से बच्चों को डर नहीं लगता. बच्चों को डर लगता है if they are left wondering and alone and confused. So your number one aim should be don't leave a child confused, don't leave a child without any kind of closure. अब closure की बात आती है तो it is very important that we help the child process the death. And how can we, अब ये जो हमारे चाहे rituals होते हैं ना, funeral rites वगैरह होते हैं, they actually help in, they are there for a reason. They actually help in processing the death. Right, for adults, but even for children. तो आप अपने बच्चे से पूछिए, okay, this has happened in our family, right? Your grandmother has died. How would you like to honor her memory? आप उनको कैसे याद करना चाहोगे? आप उनको लेटर लिखना चाहोगे? आप उनकी एक फोटो एल्बम बनाना चाहोगे? आप कैसे उनकी मेमोरी को ऑनर करना चाहोगे? And involve the child in this.
because you've had your closure. आपने अपने funeral rites कर दिए, तो you've had your closure. Maybe your child is not, as you said, the child did not get an opportunity to say bye. So please involve your child in these kind of, of course, funeral has happened, but you can still have those kind of memorial rites, right? But always remember कि trauma एक event नहीं होता है family में. Trauma is never the death of somebody in the family. Trauma is what happens when we don't talk about it in the family, when we don't process it in the family. And children के लिए हमको उन्हीं की तरह से बात करनी है उनके बारे में. We don't have to dismiss it, we don't have to ignore it, and we definitely don't have to think that we should not talk about it क्योंकि बच्चे को हमें शील्ड करना है इस पेन से. No, you should talk about it, but and be ready to answer whatever questions your child comes up with. Great, excellent. So I also advised in this case that it is right to tell the child because they were initially telling कि दादी आपकी जो है चली गई है, अब पता नहीं बाद में आएंगी. So So then the child understood. मैंने बोला आपको पता है दादी कहाँ गई है? कहती मुझे पता है वो अभी नहीं है. तो मैंने बोला तो he knew that, 6-year-old knew that, and the parents were that कि हमें तो बताया नहीं, इसको कैसे पता चल गया. मैंने बोला he will know कि क्या हो रहा है घर में. And I said कि you can talk to the child कि okay ये हो गया, this is life, ऐसा होता है. And मैंने उनको बोला जैसे कि I don't know whether it's right or not, but I told them कि you can tell the child कि the दादी जी is looking over you, she is there. आप जब अच्छी बात कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खेल रहे हो, तो वो देख रही है आपको. शी इज देयर विद यू. एंड आई थिंक पेरेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, एंड आई एम सॉरी गेटिंग इमोशनल लिटिल बिट. सो दे सेड कि नहीं, द चाइल्ड इज इंप्रूविंग and getting better. Third thing, another one case which I got is about I would say a 12-year-old child. He is fine. The family suffered COVID. He also suffered COVID and he was fine. There was no physical problem in the family. Nobody died. Everybody was fine. But that child is now so scared of everything. निकलना चाहता, वो खाने में भी डर लग रहा है उसको, हर चीज में. He's like, and sleeping disorder is there. रात को उठ जाता है, tells मम्मा मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे अब क्या होगा, क्या सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, हम लोग वापस कब नॉर्मल उसमें जा पाएंगे. And parents are like कि हमारे पास तो कोई इसका आंसर है नहीं. And it has come to a position that खाना पीना कम हो गया है, एपेटाइट कम हो गई है. पहले वो मोबाइल टीवी देख भी लेता था, वो भी नहीं देखता है. सो लाइक सडनली डिसएंगेजमेंट हो गया है. सो द पेरेंट्स हैव दिस क्वेश्चन कि हाउ कैन वी एड्रेस इट, हाउ कैन वी काउंसिल द चाइल्ड सो दैट कि दिस एक्सप्लेन टू हिम कि हाउ विल थिंग्स गेट बेटर. बिकॉज़ पेरेंट्स लाइक हमें नहीं पता सर कब ठीक होगा. तो दे आर लाइक व्हाट डू वी से, वी कांट से कि ना 5-6 दिन की बात है, 1-2 महीने की बात है. सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ टू एक्सप्लेन टू अ 12-year-old अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. Right. I think that's a very, very relevant question. तो इसमें सबसे पहले मैं पेरेंट्स से पूछूंगी कि आप क्या कर रहे हैं अपनी खुद की एंजाइटी से डील करने के लिए. क्योंकि अगर उनका बच्चा ऐसे ऑलमोस्ट टीनेजर ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग इन द फैमिली, देयर इज सम शेयर्ड काइंड ऑफ अ पेन इन द फैमिली व्हिच मे बी द पेरेंट्स आर रिफ्लेक्टिंग टू द चाइल्ड. तो मैं पेरेंट्स से पूछूंगी एंड फिर उनको मैं समझाऊंगी कि अपनी एंजाइटी से डील करने के लिए अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स दिखाइए बच्चों को. अगर मुझे एंजाइटी हो रही है एंड एंजाइटी जोन इज ओके, डोंट अगेन आई एम एम्फसाइजिंग दिस, डोंट टेल द चाइल्ड सब कुछ ठीक हो जाएगा. एज पेरेंट्स सेड हमें खुद नहीं पता कब सब कुछ ठीक होगा. सो दैट्स ओके टू टेल द चाइल्ड कि वी डोंट नो व्हेन थिंग्स विल बी ओके, बट गेस व्हाट, वी कैन फोकस ऑन थिंग्स वी कैन कंट्रोल. COVID is something we can't control. COVID आगे क्या होगा, लॉकडाउन, पैंडेमिक, we can't control all this, we can't predict all this. But what we can do is focus on things we can control. और हम क्या चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं? We can control our daily routine. We can control the activities that we choose to engage in. We can control the amount of time we choose to spend with each other as a family. See, the thing is that इस सिचुएशन को देखिए तो मतलब इट्स वी लिविंग थ्रू ग्लोबल पैंडेमिक, ओके, एंड आवर प्रायोरिटीज शुड नॉट बी कि आवर चिल्ड्रन शुड थ्राइव, हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में एस करना है, हमारे बच्चों को ये सब नहीं. आवर प्रायोरिटी शुड बी वी शुड बी इन साउंड मेंटल हेल्थ. हम लॉफ्टी आइडियल्स नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, राइट? हमारा बेसिक थिंग है कि हमारे एम्पैथी है, कंपैशन है, एक दूसरे की फीलिंग्स से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वी आर इन टच विद ईच अदर, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइम टू एक्चुअली स्ट्रेंथन आवर फैमिली बॉन्ड्स. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स कि अपने बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप है उस पर फोकस करिए, रादर देन वरिंग अबाउट योर चाइल्ड और थिंकिंग कि वी डोंट नो व्हाट विल हैपन. टेंड टू योर ओन मेंटल हेल्थ, मॉडल हेल्दी वेज ऑफ कोपिंग टू योर चाइल्ड. अगर आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल
as you said, right? You are eating dinner together as a family every day. Yeah, you are switching off all gadgets for 1 hour every day and sitting together as a family. You are engaging in something like playing a board game together, solving a puzzle together, cooking together, gardening together. You're doing some shared activity together, which makes the child feel grounded. You have a solid set routine for yourself and for your child. So all of these things are things that you can control. You can't control what's going on outside, but you can control what is in your hands, right? And that is what I would recommend to these parents. Keep Please focus on things that you can control. Perfect. Makes sense. Completely makes sense. With this, we have some questions coming up. Yeah. One of the question is it's a nice question actually. The mother has asked that toddlers are right now. So she's basically saying that we have like a small child and toddlers in the family, and she wants them to experience the world outside and what's happening and like the nature and everything. But she tries telling stories and everything, but it does become monotonous. The children are moving towards mobile and TV. Doctors saying, I used to say that do not give more than 2 hours of screen time a day, which has now become completely irrelevant. Yeah. They are going like 4 hours, 8 hours also sometimes a day. So Yeah. how can we go through like past this pandemic, but not become addicts to electronics like mobiles and stuff? ओके आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज ये जो स्क्रीन एडिक्शन है ये हमने बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत बढ़ गया है. पुअर पेरेंट्स, आई मीन चाहे वो बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस संभालें, अपना काम संभालें, किचन का काम देखें. सो कंप्लीट माई हार्ट गोज आउट टू द पेरेंट्स, कंप्लीट एम्पैथी विद द पेरेंट्स. आई एम अ फुल टाइम वर्किंग मदर, आई हैव 2 young kids, so I know how difficult it is to keep children away from gadgets. तो इसके लिए मैं 2 चीज़ें रेकमेंड करूंगी. सबसे पहले, डोंट फ्रीक आउट सो मच अबाउट स्क्रीन टाइम. Okay, and I'll tell you why. Because of course we are living through a global pandemic, but suppose आपका बच्चा ज्यादा स्क्रीन देख रहा है, तो don't count the minutes as much. मतलब ड्यूरेशन पे फोकस मत करिए, फोकस करिए कंटेंट पे. Because all screen time is not the same. See, 2 hours of playing a violent computer game and killing zombies is not the same as 2 hours of an educational app like a Khan Academy Kids, which is a brilliant app for kids learning, right? Is not the same as 2 hours of passively sitting and watching a cartoon or a movie. Is not the same as 2 hours of talking to friends, talking to video calls with grandparents, family, and all. So all screen time is not the same. So if you are counting the total duration of screen time, see कि there is a balance in that. कि अगर आपके बच्चे पैसिव स्क्रीन टाइम, वो माइंडलेस मूवी, माइंडलेस कार्टून देख रहे हैं, बैलेंस दैट विद सम अदर एजुकेशनल स्क्रीन टाइम. देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड ऑडियो स्टोरीज फॉर किड्स. देयर आर सम ब्यूटीफुल फ्री एप्स. आपको अपने बच्चे को एंगेज करना है एंड यू आर टू टाइड अप विद वर्क, पुट एन ऑडियो स्टोरी फॉर योर चाइल्ड, अ सिंपल ऑडियो स्टोरी, और पुट ऑन सॉन्ग्स फॉर योर चाइल्ड. So my point is, all screen time is not the same, and it's okay if we are relying on screen time to engage our kids to an extent, but please remember that you should balance the passive screen time with the interactive screen time in which your child's mind is being engaged in educational learning. So that distinction you have to make. And the second thing I would want to say is, yes, it's difficult to engage our kids. Screen addiction is really at an all-time high for older kids, slightly older kids, middle schoolers, teenagers. I would request the parents to make sure that your teenager is, or your middle schooler is accessing technology from a common area in the house. Because this is the time when, because online classes are on, children are watching a lot of inappropriate content, and it's not like it's their fault. It's nobody's fault. It's just that we have not educated them. We have not had these tough conversations with them. Let's talk to them. Let's use this opportunity to talk to them about explicit content, about porn, about the various cyber dangers like cyberbullying, phishing, and scams. Let's use this opportunity to educate, and no, don't make it a lecture. Talk about, talk it in a friendly way. ऐसा भी होता है. There are strangers soliciting children on the internet. There's so much stuff. So let's use this opportunity to also have these conversations. And this is not a one-time conversation. And this is definitely not a one-way conversation. These are ongoing conversations, two-way conversations, which we can utilize. Excellent. Right, but coming back to this mother of toddlers, I would say that, see, yes, I would give you a quick tip to turn even screen time into something that your children can engage in physical activity. You have these YouTube channels which have children dancing,
videos of children dancing, you put them on, and the criteria is that you get to watch this video if you are also dancing along with the children. So you have to imitate the actions, right? And that's a lovely way of turning something which is very passive, which your children are consuming, into a very active thing. So they're moving, they're developing their motor coordination, they're getting physical activity and stuff. So there's a silver lining to everything. We just need to find it. Makes sense. Perfect. So that is what I advise also, that yeah, it is now becoming necessary. Screen time is there. You can't be like the rule ki 2 hours is there and then count the minutes. Content is very important, what you are seeing. With this, I have some advice for the parents as far as tech is concerned. What happening is that I'm noticing it more and more that a 5-year-old knows how to use a phone much better than the parent. Yes. And so there is like some parents are watching Netflix, some parents have Prime. They don't have any age restriction on that, and child can watch anything anytime. So that is one thing which is there, because a parent came to me and said कि हमारा बच्चा मोबाइल से बहुत खेलता है लेकिन छुप छुप के खेलता है. तो हमें लगा कोई बात नहीं, पर हमने बाद में देखा कि then he was watching stuff which he should not be watching. Because like a 8-year-old watching stuff which is more than like would say 21 rated. So like not as a doctor but as a father, I would like to advise you, create different profiles. अगर आप Netflix use कर रहे हो, you can actually put a pin on age restricted content. Like, so if you put on a program, you want to watch some program which is very gory or has some sexual content, so age rated, it will actually ask you for that pin every time you watch that video, and that is for you only. So that is not there. Second is, always have a common space. ये नहीं कि बच्चा अलग से छुप के देख रहा है. Always be in a common space. Encourage कि आप भी देखो, थोड़ा बहुत आप भी कार्टून देखना शुरू कर दो. Doesn't matter. You might find it interesting. ठीक है ना? So सब साथ मिलके देखो. Make it a family activity. Cast it on a TV. Instead of कि यूं लेके ना ऐसे देखने के बजाय, यूं मोबाइल रखने के बजाय, put it far away and everybody is watching it. ठीक है? Third is, as Meghna said, there are a lot of activities which have screen time and involve physically the child. आप dance करना शुरू कर दो. Another shout out is a channel, you can find it on YouTube. It's known as Cosmic Yoga. What they'll do is कि like कोई फेमस मूवी होगी, लाइक किसी बच्चे को स्टार वॉर्स अच्छी लगती है या कोई कार्टून मूवी अच्छी लगती है, तो वो श्रेक अच्छी लगती है, तो दे विल स्टार्ट टेलिंग स्टोरी ऑफ श्रेक, एंड व्हाइल टेलिंग द स्टोरी दे आर डूइंग द योगा, एंड यू कैन डू दैट. टॉडलर्स को बहुत मजा आता है कि देयर फेवरेट कार्टून, दे आर एक्सप्लेनिंग द कार्टून एंड साथ साथ जो है वो योगा भी कर रहे हैं. सो दैट इज एन एक्सीलेंट, आई सेड वन मदर टोल्ड मी, सो दिस इज एन एक्सीलेंट. I had no idea. I'll try this. Thank you so much. Cosmic Yoga on YouTube, that is there. Third is अपने फोन पे YouTube app, because everybody doesn't have access कि हम टीवी पे लगाएंगे. अपने फोन पे YouTube, because I've noticed YouTube is one of the go through thing. Every kid is using YouTube and there are a lot of videos on YouTube. I would advise you, अपने फोन में YouTube app छुपा दो, hide it. There are ways to hide it very simply. You can hide it, put it in the menu lower down, screen पे मत रखो. There's some phones have a hidden space, put it in a hidden space, locked it. The child can't access it. And install an app known as YouTube Kids. With YouTube Kids, you can have a profile of the child. You can age limit the content. You can see कि वो बच्चा क्या क्या देख रहा है. And then you can, if you don't like one channel, वो ज़्यादा ad दिखाता रहता है, toys दिखाता रहता है, and you don't like it, you can actually ban that channel for your kid. So that is a better way to go through it, and then these profiles can carry forward. अगर मम्मी के फोन पे भी वही है, पापा के फोन पे भी वही है, and you have restricted the content. So it is very important what your child is seeing. Third, try to discuss. हम लोग पेरेंट्स भी आजकल होता है कि कभी suppose like we are watching a content which is 16 plus, and like it is not like very gory and stuff, but it has some things which are there on Netflix or something we are watching, and we have like a 6-year-old or a 7-year-old also watching it. So you should watch it. It's not a problem. It's not if you, because you can't be like कि बच्चे को अलग कर देंगे, अलग से देखेंगे. You watch it, fine. And if it is like something which is like not very dangerous or bad, try explaining it to the child also. कि some people are kissing, so that is there, so it's fine. It happens and everything. So it is fine कि like explain करे. Do not make environment कि अरे ये हो गया, बंद करो, बच्चे को भगा दो यहाँ से, तो बच्चे को लगेगा क्या curiosity बढ़ जाएगी. Exactly. आप सो रहे होगे, रात में कहीं ना कहीं से मोबाइल से ढूंढ लेगा. And always communicate to your child, because if you are not communicating to your child, आजकल we have internet which can answer every question. It might not be the right answer it give you, but it can answer your question. And what happens is with the teenagers, they start, because हमारे parents are always like this कि we should not talk about anything
sexually oriented or something like simple, like development wise, we should not talk about it. That way, the child will look for the answer on the internet and most probably will get the wrong answer. And then we'll have a wrong assumption. And then overall, moving forward, it will be a wrong way to go forward. So always discuss this with the parents. With this, we have we have an interesting question, different question. So I think Meghna can answer it. So they're saying not what you're experiencing, what you're saying that. Thank you so much for what you're saying. They have this question. They're asking that during the pandemic, what is happening is that because of frustration and everything, sometimes me and my wife start having an argument, not necessarily about something, but like गुस्सा आ जाता है. Yeah. And हम लोग बच्चे के सामने जो है गुस्सा कर देते हैं. छोटा बच्चा है हमारा around like 7-8 years old, and we try to avoid it, but this is happening. So how should we do that? Because we are in a lockdown environment, everybody is inside, stress is high, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है. So how should we like interact and prevent the fighting in the house? I think that's a very relevant question. And yes, the guideline is try to avoid as much as possible to do this in front of the child, of course. But obviously, it's natural. Tempers are rising. We are staring all day long at each other's faces. It's natural कि हमारा तू मैं हो गई, argument हो गया, you know, ऐसे करके हो गया एक बच्चे के सामने. So what you should do then, अगर आपका argument बच्चे के सामने हुआ है, try as much as possible कि उसका resolution भी बच्चे के सामने हो. तो यूजली क्या होता है, बच्चे के सामने लड़ाई हो गई और फिर जब बच्चा रात में सो गया तो हम कमरा बंद करके हम वी आर मेकिंग अप, ओके, बट दैट्स एक्चुअली नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज बच्चे ने क्या देखा, बच्चे ने आपकी फाइट देखी, बच्चे ने ये नहीं देखा कि, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल्सो टीचिंग योर चिल्ड्रन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फॉर टीचिंग योर चिल्ड्रन दैट कि हर एक रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होता है. And it's okay, हमको कॉन्फ्लिक्ट से दूर नहीं भागना है. We don't have to paint a utopian world for our child कि अरे मम्मी पापा कभी नहीं लड़ते. I don't think there's any child who thinks like that, right? But अगर हम अब बच्चे के सामने लड़ रहे हैं तो make sure कि चाहे उसी दिन, try as much as possible कि उसी दिन, चाहे अगले दिन, बच्चे के सामने आप बैठ के resolve कर रहे हैं उसको. Okay, so that's the first thing. And the second thing is that it's also important कि आप बच्चे के साथ ही address करें. So I would say something like this. Suppose मेरा argument मेरे husband के साथ हुआ है मेरे बच्चों के सामने, so I would go to individually each of my children because my younger one is 4 and my older one is 6.5. So there needs to be different level की conversations दोनों बच्चों के साथ. So I would go separately to them one by one and I would say something like this. बेटा आपने कल देखा मम्मी पापा कैसे बात कर रहे थे एक दूसरे से, आई एम वेरी सॉरी कि आपको ये देखना पड़ा कि यू नो मम्मी को गुस्सा आ गया, मम्मी कैसे चिल्लाई, आई फील वेरी बैड अबाउट दैट, आई फील वेरी सॉरी, इट्स नॉट योर फॉल्ट, it's not happened because of you, we have an issue that we have resolved, and if you have any issue, I know this brings up big feelings for you, please let's talk about what you felt and what you thought. Okay, and pause and let the child answer and take it forward from there. So it's very important that you process it for the child as well. You give a narrative to the child, you describe it to the child कि ऐसा हुआ फिर ऐसे हुआ, but it's okay, we can talk about it. ये नहीं कि अरे नहीं बात करनी इसके बारे में, हो नहीं ऐसे नहीं करना है. Okay, we need to talk about things because this teaches children that there are conflicts in all relationships, but there is we can resolve it in a dignified manner and we can talk about even our difficult, painful, uncomfortable feelings. Perfect. So that is very important. So I always like explain the children like in a way, like in my own way. Sometimes if you are angry and something happens, you can tell your child कि बेटा देखो आप भी गुस्सा करते हो, हम भी गुस्सा कर देते हैं कभी कभार, which is wrong, but प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो गई हैं एंड आप बताओ क्या करना चाहिए हमें ठीक करने के लिए, ऐसे करना चाहिए. इन्वॉल्व द किड इन इट, मेक इट फन. बच्चा जो है समझ जाता है. विद दिस आई हैव अनदर क्वेश्चन बिकॉज ऑफ एंगर इश्यूज दिस हैज कम अप. We have started noticing our child is basically becoming very angry very soon. Tantrums हो रहे हैं, बहुत जल्दी बच्चे को गुस्सा आ जाता है. We are doing video calls and everything. Child says कि आप मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो. They are working online. These parents are IT professionals. They are working online. मीटिंग चल रही होती है, जूम मीटिंग चल रही होती है, बच्चा बीच में कूद रहा होता है कि खेलो खेलो, कभी डांट लग जाती है, हट जाओ, मत करो, बिजी मत, हम बिजी हैं, ठीक है ना. सो दैट हैपेंस. एंड वन की द मदर इज सेइंग समटाइम्स व्हाट हैज हैपेंड इज कि बच्चे ने हमारा मोबाइल उठा के फेंक ही दिया. गुस्सा हो गया, आप बहुत मोबाइल देखते हो, और धाड़ फेंक दिया, तोड़ दिया. That has also happened, and बच्चा जो है like the anger issues are coming up suddenly, and बाद में उससे बात करो then he's fine, but
how to deal with this anger issue with a small child. I'm talking about like 7-8 year old child, Yeah. 5-6 year old child. How to talk about anger? The child is getting angry a lot. छोटी छोटी बातों पे tantrums हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है. How do you make the child become more comfortable and deal with his own anger issues? Fair enough. I think again that's a very relevant question given the fact that we are all closed in, and of course we are feeling irritable and angry. And one thing that you need to remember also कि बच्चों में इतने tantrums हो रहे हैं, that is also a sign of anxiety. By the way, it's not कि सिर्फ it's only anger. It is masked anxiety sometimes. So anyway, so I'll suggest one tip that will help parents deal with whether it's tantrum because of anxiety or anger or whatever, deal with it much better. So the first thing that you need to do is, see, हमको सिखाया गया है जब भी हम कुछ करते हैं गुस्से में, हम जो भी करते हैं गुस्से में गलत होता है, राइट? तो हमको सिखाया गया है कि हमको ये मत करो, वो मत करो. तो जो हमारे मुंह से चीजें निकलती हैं बच्चों के लिए जब वो गुस्सा हो जाते हैं, अरे यहाँ मत कूदो, जैसे आपने बोला ना, यहाँ मत कूदो, हमको काम करना है, ये मत करो, वो मत करो. लेकिन हम ये बताना भूल जाते हैं बच्चे को कि बच्चा करे क्या. जब मुझे गुस्सा आ रहा है मैं करूं क्या. तो this is, तो your focus again has to shift from कि क्या ना करो to क्या करो. So at a time when you are calm and when your child is calm, what I suggest is make an anger list with your child. Sit with your child, your young child, and say ki, you know what, when we get angry, this is what, explain the science behind it. This is what happens in our brain, this is what happens in our body. हमारा brain fight or flight में चला जाता है, हमारा thinking brain एकदम बंद हो जाता है, हमको सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा दिखता है और कुछ नहीं समझ आता है, right? So explain the science behind what happens in our brain and our body when we are angry. And then you tell the child, you know what, but you know, the good news is we can do something about it. When we feel angry, we can actually calm ourselves down and make ourselves feel better. So let us think of all the activities. Let us brainstorm all the activities that make you feel better. Okay, and then you give your child some paper, crayons, let him draw it out, let him write out some ideas. You make your own anger list. Okay, and then the next time when your child is angry, you just remind him, बेटा आपने अपनी anger list बनाई थी ना, उसमें आपने क्या क्या लिखा था? I will do 10 jumping jacks. I will drink a glass of cold water. I will go to the bathroom and splash cold water on my face. I will punch a pillow. I will tear old newspaper. I will listen to my favorite song. I will go to the balcony and take in a deep breath. Whatever it is that makes your child feel good, but this will only work if you do the same. This will not work if you're only doing this to, you know, to make your child do this. This has, because children modeling is very important. How you model, how you handle your anger is as important to the child, because बच्चे हमको देख के सीखते हैं, हमको वो observe करते हैं हमें. They're like monkey see, monkey do, right? So how you deal with your anger is equally important in helping your child deal with this anger in a healthy way. Good. That's a great answer, actually. So another question which has come up is that I have a 7-year-old child who has suffered COVID, and now he has become very forgetful and anxious. So I would like to address it. This is one of the most common mental problems you can say in children, especially the forgetfulness, and anxiety is obviously there with it. So there are two aspects, physical aspects as far as I'm saying. इसकी problem ये होती है कि बिकॉज ऑफ खूब सारी जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं कोविड के अगेंस्ट, वो हमारे ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, किस तरीके से ब्रेन में मेमोरी स्टोर होती है, क्या होता है, उस पर जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं. एंड उसकी वजह से फॉरगेटफुलनेस जो है अडल्ट्स में भी होती है, बच्चों में भी होती है, एंड इट इज वेरी कॉमन. अच्छी बात यह है कि ये टेम्पररी होती है. एनीवेयर फ्रॉम 3 months to 4 months यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि ये ठीक होने लग जाएगा. ठीक है. एंजाइटी के भी 2 रीजन होते हैं. मेंटल इज देयर, एज डॉक्टर मेघना हैड सेड. Physical anxiety is also there. Physical anxiety में क्या हो रहा है कि the heart rate, because of the antibodies, the heart muscles become weak. हम उसे कहते हैं myocarditis. Muscles जो है, जो myocardium यानी heart की जो muscles है, वो थोड़ी कमजोर हो जाती है. And because of this कि हम हल्का सा भी बच्चा चलेगा, हल्का सा भी भागेगा, कुछ भी करेगा, तो then heart rate बहुत जल्दी बढ़ जाता है. So normally बच्चे का heart rate about like 90 के आसपास या 100 के आसपास होना चाहिए. Suddenly 130 जंप कर जाएगा. और आप सब लोग जानते हो कि अगर हमारा भी हार्ट रेट 130 हो जाए, लाइक धक 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 कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं घबराहट सी हो रही है, बच्चे को अजीब सा लगता है, तो एंजाइटी जाती है. सम केसेस वी आर गिविंग मेडिसिन फॉर दैट टू लोअर द हार्ट रेट स्लाइटली, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टेंटली हार्ट रेट राइज है. थर्ड व्हाट वी आर सीइंग इज कि बच्चों में स्पेशली जिन बच्चों में विटामिन डी लेवल इज लो, नॉर्मल से कम था, post COVID they are experiencing more problems, physical and mental, compared to people who had a normal level of vitamin D. Even adults, that has been proven. In a US study they said that all the patients who had normal level of vitamin D after the illness, they were better with the side effects
compared to who are not who had low vitamin D. Another thing is important is what we have to take care is iron, zinc, and vitamin D. I think if these three things are given in supplement form, natural form also, they will make the child feel much better and recover much quickly. So that is something I recommend for any child who has gone through COVID. Blood test मत कराओ कि vitamin D level कितना है. Just take one dose of vitamin D as advised by your doctor कि age के हिसाब से कितनी लेनी चाहिए. Adults के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है. Just take one shot of vitamin D and that will help a long way. ठीक है. Third is which we are seeing now in kids post COVID is there कि what is it? हाँ, the forgetfulness के साथ साथ जो है what we are noticing is sudden throat infections. So this is very common which are seeing. बहुत सारे patients are coming back to me कि with कि सर इसके throat में ना itching होती रहती है, chronic cough है, dry cough है, COVID सब खत्म हो गया, COVID के time जो था cough नहीं था, अब आ गया, ठीक है. Second, another thing which we are experiencing physically in children is dry eyes. So right now, a lot of kids will come post-COVID की पहले they don't even know COVID हुआ था नहीं. Family में किसी को हुआ, asymptomatic हुआ, बच्चे को पता भी नहीं चला, टेस्ट भी नहीं कराया. But now the child is coming कि मेरी eyes बड़ी red जाती है, ये हमेशा अपनी आंखें रगड़ता रहता है, इसको ना itching होती रहती है eyes में. That is also one thing which is post-COVID. So all these things are temporary. And interestingly, a lot of cases जब देखे गए, so in 30% of the cases, the problems occurred after COVID. So during COVID, they were fine. थोड़ा बहुत बुखार आया, ठीक आ गए. But these problems are coming after COVID. कि itching हो रही है, खांसी हो रही है. Some kids even had tonsillitis. Literally tonsil inflamed हो गए, tonsillitis हो गई. So that is something to look carefully कि ये सब problems ना आए. Children who have proper amount of vitamin D, vitamin A, zinc, iron, they have less. So always consult your doctor कि post COVID ये नहीं कि अब सब ठीक हो गया, बात नहीं करनी, अब ठीक हो गया, but just ask him कुछ medicines या कुछ supplementation हमें देना चाहिए ना देना चाहिए. And if the child is having some anxiety issues, do talk to a counselor or ask your doctor कि so that कि किससे discuss कर सकते हैं, कैसे discuss कर सकते हैं, because talking to a child goes a long way. That's what I've seen. Yeah. Then we have a question with the बच्चा कोई भी outdoor activity में बाहर नहीं जाता है, सिर्फ टीवी या मोबाइल में लगा रहता है. एंड अगर मोबाइल, दिस इज अ 4-year-old चाइल्ड, अगर मोबाइल हल्का सा भी छीना जाए तो बहुत एंग्री फेसेस बनाता है. Cute question, but that is what is experiencing. And Dr. Meghna already addressed it. But how will you do it with like a 3-year-old? मैं आइडिया दूंगा कॉस्मिक योगा कराओ बच्चे को, अच्छा रहेगा. या उसके साथ डांस करो वीडियो लगा के. But absolutely. Yeah, no, so I mean, more. I will just add on to what I was saying before कि अगर इतना छोटा बच्चा, सबसे पहले तो छीनना नहीं है उससे मोबाइल, बिकॉज अगर हम छीन रहे हैं, हम उसको खुद ही सिखा रहे हैं कि छीनना इज एक्सेप्टेबल. वो आगे जाके और हमसे चीजें छीनने लगेगा. सो छीनना नहीं है. The one thing that usually works is we for इतने छोटे बच्चों के लिए ना हम एक टाइमर ले आते हैं. उनको टाइम भी देखना नहीं आता ना, या हम अपने फोन पे एक टाइमर लगा देते हैं. हम उनको बोलते हैं कि आपको यू विल गेट स्क्रीन टाइम फॉर एग्जांपल इज अभी के लिए आप आधे घंटे के लिए. अब बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं, आधा घंटा क्या होता है, 10 मिनट क्या होता है, दे वोंट नो. इतना यंग बच्चे को नहीं पता होता है, तो उसको बस ये पता है कि टाइमर है. या अब आइडियली तो ऐसा टाइमर है जो बच्चा खुद बंद कर सकता है, राइट. खुद वो टाइम होके उसका वो उसमें घंटी बजने लगेगी आइडियली. पर अगर आपके पास ऐसा वो नहीं है तो आप अपने फोन में भी लगा सकते हैं टाइमर, राइट. तो टाइमर लगाइए और 10 मिनट खत्म होने के पहले, 5 मिनट खत्म होने के पहले बच्चे को स्लाइटली क्यू कर दीजिए कि बेटा 10 मिनट बचा है, बेटा 5 मिनट बचा है. एंड देन जब खत्म हो गया टाइम और जब आपके बच्चे की वो बार्गेनिंग शुरू हो गई, मम्मी 5 मिनट, मम्मी 10 मिनट, मम्मी ये एपिसोड खत्म हो जाएगा, तो यू लेट द एपिसोड फिनिश. एपिसोड खत्म होने दें, ये नहीं कि एपिसोड आधे घंटे तक और चल रहा है. एपिसोड खत्म होने दें, जितना भी 5-6 मिनट्स जितना भी बचा है. एंड देन टेल द चाइल्ड कि बेटा आपको मेरी मदद चाहिए बंद करने के लिए या आप खुद बंद करोगे. गिव दीज 2 चॉइसेस. आप खुद बंद करोगे या आपको मेरी मदद चाहिए बंद करने में. डू यू नीड माई हेल्प. एंड यूजुअली अगर आपके बच्चे में सेल्फ रेगुलेशन की कमी है, वो बोलेगा कि मम्मी आप ही बंद कर दो, मुझसे नहीं बंद होता. या वो बोलेगा नहीं मम्मी थोड़ी देर और, या वो बोलेगा नहीं मैं खुद ही बंद कर देता हूँ. पर अगर वो बोलेगा थोड़ी देर और, इसका बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज स्क्रीन टाइम लगाने से पहले आपको ये डिस्कशन करना है अपने बच्चे के साथ. और छोटे बच्चे, 3 साल का भी छोटा बच्चा समझ जाएगा कि मेरी आज इतनी की लिमिट है और मुझे मतलब मेरी मम्मी मुझे ये स्क्रीन टाइम खत्म होने पर ले लेंगी. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना इसमें, जब हम खुद इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं. अगर हम एक रूल सेट कर रहे हैं, अगर हम अपने बच्चे के लिए बाउंड्री सेट कर रहे हैं,
तो इतना ही जरूरी है कि हम उस पर खुद उसको फॉलो करें। कई बार क्या होता है, वी आर बिजी, तो वी टेल द चाइल्ड कि हाँ हाँ थोड़ा और देख लो, तो उससे बच्चा लर्न्स कि समटाइम्स आई कैन थ्रो अ टैंट्रम एंड एक्सटेंड माय टाइम, तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर आपने प्री डिसाइड कर रखा है कि इतना हमें स्क्रीन टाइम देना है बच्चे को, तो यू हैव टू आल्सो स्टिक टू इट। यू कांट जस्ट गिव इन कि जस्ट बिकॉज यू आर बिजी और जस्ट बिकॉज आपको अपना काम खत्म करना है अपने बच्चे को दिखा रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना है। सो यू हैव टू प्री डिसाइड एंड देन यू हैव टू गिव योर चाइल्ड अ चॉइस एंड टाइमर। Perfect, perfect. I would like to add something to this that you have to be very flexible with the child. ठीक है ना? A timer is amazing at this age. Timer is very important because it teaches की self regulation, कि time पे क्या है करना, and management also, कि बच्चे को जो है नहीं कि regularly वीडियो देख रहा है, he'll be able to decide कि मुझे क्या देखना है, and time will be decided. One thing I would like to add is कि what we recommend is कि you give it a positive reinforcement. अगर बच्चे ने आपको बोला कि आपने टाइम बताया एंड देन उसने टाइम पे लाइक गिव इट लाइक हाँ ठीक है आपका वीडियो 2 मिनट का बचा है आप देख लो, अगला वीडियो नहीं लगेगा बट इसके बाद आप दे दोगे अपने आप, बच्चे ने अपने आप दे दिया, अप्रिशिएट इट एंड रिमेंबर इट, एंड नेक्स्ट टाइम जो है कभी जब वो खाली बैठा है आपको लग रहा है बोर हो रहा है, आप उसको आपको मोबाइल देना ही है या मांगने वाला है अपने आप खुद ही दे दो, कहते हो कि आपको देखो आपने जो है पहले अपने आप दिया था, आप इतने अच्छी तरह अच्छे बच्चे हो, आपको हम दे रहे हैं, आप 5 मिनट और देख लो, मतलब कभी बाद में इवनिंग में कभी अलग टाइम से, चाइल्ड विल अप्रिशिएट इट। एंड अगर ही इज वेरी एंड डोंट बी द अदर वे अराउंड, होता क्या है कि पेरेंट्स जो है नेगेटिव को रिमेंबर करते हैं और उसको याद कराते रहते हैं, आपने मोबाइल नहीं दिया था, आप ऐसे हो वैसे हो, उसने 4 बार नहीं दिया मोबाइल, एक बार दिया तो 4 बार को मत बोलो, जो एक बार उसने दिया उसी को बोलो पॉजिटिवली बार बार कि यस आपने देखो कितनी अच्छी तरह दिया, आप कितने अच्छे बच्चे हो, ये करके, एंड देन यू विल एक्सपीरियंस की थिंग्स आर गेटिंग बेटर। थर्ड इज कि जैसे बताया कि डोंट स्नैच अवे द मोबाइल। एंग्री में सम मदर इज आल्सो सेड कि थैंक यू फॉर द एडवाइस, व्हाट इज वाज हैपनिंग वाज कि बच्चा हम पे गुस्सा हो रहा था, हम उस पे गुस्सा होते थे, सो इट वाज लाइक वन ऑन वन लड़ाई होने लग जाती थी एक तरीके, बच्चा गुस्सा हो रहा है हम भी गुस्सा हो रहे हैं, हमने डांट लगा दी उसको, सो दैट इज नॉट द राइट वे। आई वुड रिकमेंड जब बच्चा गुस्सा हो रहा हो, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग विद द चाइल्ड, कि छोटे से बच्चे के साथ आप आर्ग्यू करने लग जाओगे, नहीं तुम जो कर रहे हो गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चे के साथ कर रहे हैं, लाइक इवन लाइक लेस देन 10 year old आल्सो डू नॉट स्टार्ट आर्ग्यूइंग की लड़ाई करनी है हमें, और अब होता क्या आर्ग्यूमेंट में व्हाट हैपेंस इज द चाइल्ड आल्सो वांट्स टू बी द विनर, यू आल्सो वांट टू बी द विनर, एंड वेरी इजिली जो एक्चुअल बात है उससे डाइवर्ट होकर सब उधर चला जाता है, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम एन ईगो इशू कि मैं जीतूंगा, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक बच्चे स्पेशली लाइक 6 year old 7 year old है, कहीं और डाइवर्ट कर दो, ठीक है ना, इट वाज लाइक अ मीनिंगलेस इशू, लड़ने से अच्छा है कि आप उसको जो है बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है, लड़ाई कर रहे हैं तो आप भी लड़ाई कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ दैट गिव द चाइल्ड अ हग, टिकल कर दो, मेक इट अ फाइट, अच्छा आप मुझसे लड़ रहे हो मैं आपसे टिकल फाइट करूंगा, मैं आपको टिकल करूंगा, ठीक है, अच्छा अगर ये करना है पिलो फाइट कर लेंगे हम, ठीक है ना, छोटा बच्चा है, दे सडनली गेट डिस्ट्रैक्टेड, हंसने लग जाएंगे। इफ द चाइल्ड गुस्से में आके आपने बच्चे में गुस्सा किया, उसने बच्चे ने गुस्सा किया एंड आपने बच्चे को एंड में रुला दिया और रुलाने के बाद आपको लगा कि अभी समझ गया, दैट इज नॉट द राइट वे, दैट इज नॉट द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड। आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करो इन अ वेरी, नहीं ये नहीं अलग कुछ करो, बल्कि इमीडिएटली मेक हिम हैप्पी, गिव हिम अ हग, ठीक है ना, सडनली टिकल करो, पिलो फाइट करो, चाइल्ड विल फॉरगेट इट, यू स्टार्ट द मोमेंट द चाइल्ड स्टार्ट्स लाफिंग, आप जीत गए, आपने कर लिया व्हाट यू वांटेड टू डू, चाइल्ड विल बी फाइन, वो टैंट्रम खत्म हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा, आपके साथ खेलने लग जाएगा, आप उसका इमेजिनेशन जो इमेजिनेशन के हिसाब से गेम चल रहा है आप उसके साथ खेलने लग जाओ, कोई बच्चा कह रहा है मुझे ज़ॉम्बीज मारने तो आप शुम शुम करके मार रहे हो, आप ना फेक बुलेट बैटल्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, once everything is over, maybe like few minutes to few hours, whatever the time is, when the child is fine, you are in a calm state, child in a calm state, then talk to him कि बेटा आपको गुस्सा क्यों आ गया था इस बात पे, ठीक है ना, एंड अच्छा अगली बार जैसे गुस्सा आए तो लाइक इफ द चाइल्ड इज स्मॉल, बेटा आपको फायर बेली में ना फायर हो जाती है तब गुस्सा आता है, ठीक है ना, तो व्हाई वाज द रीजन कि आपको बेली में फायर लग गई थी, एंड अगर अगली बार लगे तो हमें क्या करना चाहिए, तो टिकल फाइट करना अच्छा रहेगा, या मैं आपको बताऊं कि आपको गुस्सा आ रहा है सो दैट विल काउंट टू 10 और वील स्टार्ट सिंगिंग और वील डू द पिलो फाइट करेंगे, जो भी अच्छा लगेगा, एंड एज डॉक्टर मेघना सेड मेक अ लिस्ट एंड पुट इट समवेयर इन द फ्रिज और ऑन अ अलमीरा एंड लाइक देयर, जब गुस्सा आए मेक इट अ गेम, बिकॉज बच्चे को टैंट्रम हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, अब बच्चे को गुस्सा है, बच्चे ने सडनली गुस्सा आ गया, मोबाइल दे रहे हैं, आपने बोला कि नहीं टाइम हो गया, आपने किया, बच्चे गुस्सा नहीं क्या मुझे करना है, ओ बेटे को गुस्सा आ रहा है, देखो भी क्या करना है, लिस्ट में से क्या करें पिलो फाइट करें,
तो बच्चे को हमसे कहा अच्छा मोबाइल हटाओ तो टिकल फाइट होने वाली है. So I would just like to add something here, Shantanu, to what you're saying. It's beautiful the strategy that you're describing, but it's actually not called distraction. Distraction usually nahi karte hain. But what you're saying is absolutely right. This is what we do. But you know what this is? Ki agar you're not entering into the power struggle. With the child, what you're doing is you're changing the mood. You're starting tickling. You're referring to the anger list. You're doing all these strategies. This is actually you're working also on your relationship with the child. You are telling your child without saying it out, "Ki my relationship with you is important." Much more than these power struggles, and that is a beautiful lesson for the child. कि अगर हम उसको टिकल करने लगे, अगर हम उसको ऐसी कुछ चीजें करने लगे जिससे हमें पता है उसका जो फायर इन द बेली है, उसका एंगर है, कम हो जाएगा. This is also us honoring our child's relationship with us. So it's a beautiful strategy. So we always encourage doing this with the child, even like normal issues में भी. And हम लोग बाद में भी कहते हैं कि like talk to a child as an adult, ठीक है ना? अगर कभी if the child sometimes says or does something, because I have children वो मारते हैं, तो गुस्से में आके ना they just hit the mother, कहते हैं मदर को, कहते हैं बहुत बुरी तरह मार दिया, लिटरली मतलब मुझे मुक्का मार दिया, सर मार दिया, हेडबट कर दिया मुझे, मैं गोदी में उठाया हुआ था, like 6-7 year old child हेडबट कर दिया, मेरे like black eye हो गई, तो बहुत बुरी तरह मारा होगा. So फिर मैंने बोला आपने क्या किया, कर मुझे मैंने मुक्का मार दिया. तो मैंने बोला अरे ऐसे नहीं करो, पापा ने थप्पड़ मार दिया, मैंने उसको झटका दे दिया, वो क्या करे एकदम से था. मैंने नहीं मैंने देखो ट्राई टू डोंट रिएक्ट, मतलब आई नो सडन रिएक्शन होता है कि बच्चे को एकदम से थप्पड़ मार दें, कुछ कर दें, डोंट रिएक्ट विद दैट. टाइम तो थोड़ा पास होने दो, आप चाहे चुपचाप चले जाओ, बच्चे से बात मत करो, बोलो मैं आपसे बात नहीं करूंगा थोड़ी देर के लिए, मारो मत. चाइल्ड शुड नो कि ये गलत किया है, फिजिकल हिटिंग शुड नॉट बी अलाउड, ठीक है ना. नॉर्मली बच्चा या तो कहीं फैमिली में देख लेता है या कहीं वीडियो पे देख लेता है, जिससे उसको वो ये हिटिंग का लगता है कि दैट इज आल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगर रिजॉल्विंग इश्यूज को करने के लिए. सो डू नॉट एड्रेस इट दैट टाइम कि मतलब कि इमीडिएटली मतलब लड़ने लग गए उससे कि तुम क्यों मारा, क्या करते हो, गंदे बच्चे हो, ऐसे नहीं करना. जस्ट स्टे काम फॉर अ व्हाइल. आफ्टर सम टाइम टॉक टू द चाइल्ड, बिकॉज चाइल्ड इज ऑल्सो फीलिंग बैड. ऐसा नहीं है अपना ही बच्चा है, किसी और का नहीं है, चाइल्ड इज ऑल्सो फीलिंग बैड. टॉक टू द चाइल्ड एज एन अडल्ट कि बेटा आपने देखो मारा, आपने शायद गलती से मार दिया होगा, गुस्सा आ गया होगा, बट देखो अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, आपको इतना गुस्सा क्यों आया, मुझे बहुत बुरा लगा एज अ मम्मी और अ पापा कि आपने देखो मुझे मारा, एंड अगली बार कभी ऐसा हो तो आप मुझे बताओ कि क्या बात है, हाउ कैन वी अवॉइड दिस. So I would like to ask your things कि parents में how should they address this, especially the children. Obviously, like somebody's asked कि 4-year-old gets very angry, starts shouting and even beating everybody. So what do we do with this? A child who has become very physically aggressive now. So I think what you said, Shantanu, was absolutely bang on. So always remember when you're dealing with some behavior problem in the child, जैसे कि वो गुस्से में मारने लगता है, you always have to make space for the feeling, but draw a boundary for the behavior. So there's a difference between feeling and behavior. All feelings are okay. Gussa is okay, pain is okay, irritation is okay, hurt is okay, and you have to validate the child's feeling. So in a situation in which कि बच्चा मुझे मार रहा है, जब वो बहुत गुस्सा है, I would say this, बेटा I can understand how angry you must be right now. गुस्सा आ रहा है ना, frustration हो रहा है ना, but I can't let you hit me. और अगर वो फिर भी physically hit कर रहा है, I will gently hold his hand. So I will physically prevent him from hitting me, but not by hurting him, but by preventing him physically by holding his hand. Okay, but I would actually keep saying words of empathy, words of validation about the feeling. I'm not validating the action, I'm not validating the behavior, I'm not reinforcing the behavior. I'm saying I understand that you're angry, I get it, I hear you, of course you're so frustrated, but I cannot let you hit. So 2 things are important: validating the feeling, accepting the feeling, and drawing a boundary. Boundary is you're setting a rule ki hitting is not accepted in our family. So both these things you have to do continuously, regularly with your child, and of course give him tools कि वो अपने आप को अपना जो physiological arousal है anger की वजह से वो कम कर सके. Give him tools for that, and don't punish him, because by punishing the child we are teaching the child it's okay to hit somebody when they're not doing what we are telling him to do, which is exactly what the child is doing. They are not able to control themselves and they are hitting out. So please avoid punishing your child. Do not punish a child, because when we hit a child ourselves, we are giving the message that hitting is okay. Hitting is okay when you are angry, but hitting is not okay. Anger is okay, hitting is not okay.
with this, I would like to add to this कि what I noticed that, and I'm trying to explain to the parents also, because it's very common. I thought कि ऐसा नहीं होता, but it's very common. 1-year-old child or a 2-year-old child चलते चलते गिर गया, बिस्तर से चोट लग गई, साइड से चोट लग गई, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को भी पेरेंट्स पिटाई कर लेते, अरे इससे चोट लगी है, मतलब अरे अच्छा बेड लाइक एज ऑफ द टेबल लग गया, टेबल की पिटाई हो रही है. दिस इज रॉन्ग. यू शुड नॉट टीच योर चाइल्ड कि हाँ भाई वो बच्चा जो है सडनली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि अरे वाह अच्छा टेबल की पिटाई हो रही है, खुद भी तुम भी टेबल को मारो, हम भी टेबल को मारेंगे, तुम भी टेबल को मारो, हिट द एज ऑफ द बेड की जहां से चोट लगी है इसकी पिट्टी करो, चलो. दैट इज रॉन्ग. मतलब आपने फाउंडेशन ही गलत बना दी. आपने बोला कि अगर गुस्सा आए या चोट लग जाए या यू फीलिंग दैट एंगर, फ्रस्ट्रेशन की चोट लग गई, दर्द हो रहा है, सैडनेस है थोड़ी सी, मारो, मारने से इलाज हो जाएगा. दैट इज द रॉन्ग वे. आपने फाउंडेशन में गलत कर दिया. दिस चाइल्ड विल स्टार्ट हिटिंग एवरीबॉडी. Second is, I would add just 1 second, Shantanu. I would add कि उल्टा करना चाहिए. So what you should actually do is, of course, you tend to your child and you say, "Oh, I'm so sorry, लग गई," and you rub that area and all, and then say, let's ask the table. Table को भी तो नहीं लगी, and we actually do that. So we say, "Table, beta, आपको लग." This is just a play with small children, right? We say to the table, "Are you feeling okay?" So you're actually modeling कि अगर गलती से भी लग गई, तो we display empathy. That's what you're modeling. So I just wanted to add that. That is an excellent thing. I never thought of that. Instead of just pity nahi karo, like encourage empathy. So exactly. For the child to encourage empathy. दूसरों के लिए consideration रखना, आप अगर अर्ली एज पे एक फाउंडेशन रखोगे, दैट गोज अ लॉन्ग वे. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि आपने स्टार्टिंग में उसको ना हर चीज को डील करने को एग्रेसिवली सिखाया है, मारो, ये करो, वो करो, वो करो, एंड दिस चाइल्ड विल नॉट लर्न एम्पैथी एज अ कोर फाउंडेशन इन द लाइफ, अर्ली इन द लाइफ. तो आगे चल के प्रॉब्लम आती है. तो जैसे हाँ किसी को लगे, जैसे चोट लगी, जैसे इंडिया में बहुत कॉमन होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ चोट लग जाए, तो लड़ने के लिए पहले रेडी है. ये नहीं कि किसको चोट लगी, क्या हो रहा है, बस लड़ लो पहले. दैट इज व्हाट वी बीन टॉट कि जल्दी से इफ यू फाइट एंड देन वी आर मोर एग्रेसिव, देन दैट इज द राइट वे, instead of just thinking क्या हुआ, किसको क्या हुआ. So that is important to have empathy also, because we know what we are going through right now, and empathy is the only thing which we have right now for everybody else. And what we saw with this pandemic was that we have one more question, then we'll end the session. So the last question is that we both are working, mother and father both are saying that we both are working individuals. We have a lot of meetings online and we are working online most of the time. Our child becomes very aggressive and says ki you're not playing enough with me, and we have to do our work also. But how do we manage both while we are working from home and explaining to our child and like dealing with the child ki how to spend time? Because the child thinks ki now, because the parents are at home, the child needs 24/7. That's what is written. Need 24/7 the parents' attention, but we can't manage that. So how do we deal with it? So as a full-time working mother myself, who's been working from home throughout, I completely understand your parents, and my heart goes out to you. I get how tough it is to manage young children with full-time work. And how I would invite you to encourage this, to look at the situation as your child's cup is empty. See, children as well as adults have this need for connection. Okay, they want a whole lot of love, safety, validation, and we are their North Star towards which they orient themselves, right? So we are their world. They revolve around us in that sense. So make sure that. So I'll give you 2 strategies. The first strategy is make sure that you're filling your child's cup, okay, regularly throughout the day. So I have a long meeting. I have a 2-hour meeting. Then after my meeting, I have another meeting, but I take a 15-minute break in that meeting. And in that break, I am filling my child's cup. And how do I fill my child's cup? I spend one-on-one time with them without my mobile, without worrying about chores, without doing this, without doing that. Okay, so I'm giving my 100% undivided attention to the child, distraction-free attention, distraction-free time to the attention to the child, and filling my child's cup. And then I'm saying, before I enter into another meeting, Shweta, I am entering into this meeting. If the child is young, they don't have any sense of time. You say things like, Mama will be closing the door. There are snacks on the table. There are some coloring sheets and crayons for you that I've laid out. There's a busy box. A busy box is basically just you take an old shoe box and you fill it with some interesting knickknacks and items, and you keep rotating it on a regular basis so the child doesn't get bored. There's a busy box ready for you. You can explore that. Okay, and I'm going, and once I come out, we will play hide and seek. So again, you're developing a narrative in the mind of the child, what to expect.
And throughout the day, you are filling the child's cup by giving those little bits of undivided attention. And when you do that, you will realize that the child is much better able to tolerate the separation, much better tolerate the absence. Okay, so that's the first thing that I would like to say. And generally to all the parents, what I would like to suggest is what I call a special time. Special time is again based on the fact that children, the one of the most powerful needs is the need for connection. So at least 2 times a day for just 10 minutes each, 10 minutes in the morning, 10 minutes in the evening. Like हम खाना खाते हैं ना, we eat breakfast, then we feel hungry again, we eat lunch, then we feel hungry again, we eat dinner. हम एक पूरे दिन का खाना एक बार में तो नहीं खा लेते ना. So it's like that. Their need for love is like that. They need continuous, regular doses. So 2 times in a day, just for 10 minutes each, spend, like, call it my special date with my child. And say कि बेटा 10 minutes के लिए whatever you say we'll do. आप बोलोगे let's jump, we'll jump. आप बोलोगे let's do pillow fight, we'll do pillow fight. Whatever the child is telling you, you let the child lead the play. Just for 10 minutes. And again, that time should be distraction free, no phone, no mobile, no chores, no even mental planning, nothing. And then at the end of that, and if you do this regularly, I assure you that your child's need for love will be met, and the child will not start to continue to bother you so much कि मेरे साथ ये भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, right? So these are the 2 strategies that I suggest. Perfectly. I completely agree with it. Because we are working from home, this is becoming a very common thing that children are feeling distracted because parents are there और वहाँ पे वो नहीं कर पाते, interaction नहीं कर पाते. Even we as parents are having difficulty in creating a boundary. पहले simple था, ऑफिस में गए, काम किया, काम करके घर में आए तो घर में आ गए. So working from home has its benefits and has its downfall also. So ये downfall में आता है कि people are having difficulty creating a boundary. Because some parents, I have read studies also, they have experienced, some are very happy कि हमें सब समझ में आ रहा है, we are very happy working and staying at home, कुछ नहीं करना पड़ता. Some are actually saying कि हम actually office के बाद हमें anxiety and depression, not anxiety and difficulty हो रही है creating a separation from home and वो. पहले क्योंकि physical separation था तो mental separation था, अब वो खत्म हो गया है. So what happens is कि like मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद फिर वो फोन पे मीटिंग पे नेट व्हाट्सएप पे चार्ट चल रहा है कि क्या क्या करना है, फिर ईमेल्स कर रहे हैं फोन पे, फिर कुछ चल रहा है. So it is very important to have a, like you can say, a divide your time, schedule your own time as a parent, and then explain it to the child कि okay बेटा हमारी ये मीटिंग है यहाँ से यहाँ तक, that is going to be like office time. उसके बाद exactly इस टाइम मीटिंग खत्म होती है because you know मीटिंग कब खत्म होने वाली है. इस टाइम मीटिंग खत्म होगी, इस टाइम से लेके इस टाइम तक is I have another meeting with you. ठीक है ना? So it is only going to be पापा and son और मम्मी and son, and हम लोग जो है आप उसमें अभी डिसाइड करोगे कि हमें क्या करना है. पेंटिंग करनी है, कलरिंग करनी है, जंपिंग करनी है, डांस करना है, जो आप कहोगे हम करेंगे. ठीक है ना? एंड स्टिक टू इट. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि हाँ बेटा आपके साथ टाइम है और उस टाइम में हाँ बच्चा खेल रहा है, हम थोड़ा अच्छा बॉस का मैसेज आ गया, चलो मैसेज कर रहे हैं, अच्छा ईमेल करने लगे. बच्चा नोटिस कर रहा है कि आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था यू आर गोइंग टू प्ले विद मी, यू आर गोइंग टू प्ले अटेंशन टू मी. For a doctor difficult है, but बाकी लोगों के लिए I would advise कि just switch off your phone for a while. ठीक है ना? Switch off your phone कि okay अब जो है मैं ये आधे घंटे के लिए मैं फोन ही ऑफ कर दिया, मतलब खत्म बात. ठीक है ना? कोई पॉपअप नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई व्हाट्सएप का टिंग टिंग नहीं आएगा, कोई कॉल नहीं आएगी. इफ यू नो कि मतलब कि देयर आर अदर वेज दैट इन इमरजेंसी पीपल कैन कांटेक्ट यू, या मेरे होगा तो मेरी वाइफ को फोन मिला देना. लेकिन जो है जस्ट माय मोबाइल इज ऑफ ऑन एयरप्लेन मोड, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, 30 मिनट्स खेलूंगा मैं. And as a parent also you will cherish those memories. ठीक है ना? Because वो क्या रहा है कि parents are what they are doing is कि they are staying together but not living together. तो काम चल रहा है, बिजी है, सब चल रहा है, वर्क इज नेवर एंडिंग. रात को भी 2 बजे भी मैसेज कर रहे हैं, रात को ईमेल बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, मॉर्निंग में प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड देन लाइक दिस द डिवाइड नेवर हैपेंस कि आप घर पे आए नहीं हो, यू आर ऑलवेज इन द ऑफिस. So that is very important to create this mental partition कि ऑफिस का काम क्या है, घर का काम क्या है, and create a schedule. बहुत सारे कैलेंडर एप्स है, उसमें एक्चुअली करो कि हाँ यहाँ से यहाँ मैं काम करूंगा, मैं ये टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूंगा, because that is the only thing we have in this pandemic. So this, I would like to say we're coming to the end of the presentation. Thank you, Dr. Meghna, for being there and explaining all the questions. The parents are applauding right now. There were a lot of questions which were mostly addressed about anger issues and addiction of TV and mobile. That was there. And parents are saying you have given us a lot of skills
which we can use, because initially we were using, like, we had no knowledge, we were doing whatever best we could do, which was not the right thing, which we are now understanding. So with this, everybody is saying thank you so much. And I would say that pandemic is going to stay. So this might sound very bad coming from a doctor, but pandemic is going to stay. It is not going to be like a first wave आई, second wave आई, अब खत्म हो जाएगा, अब तो कभी नहीं होगा. Waves will come back up and down. Sometimes higher waves, sometimes smaller waves. अगर कोई नया variant आ जाएगा जो जिसे immunity नहीं होगी, it will go up. If it is a common variant जो है, then there'll be like small ups and downs. We have to take precautions. First was like preventing COVID. Now it is living with COVID. So it is not going away. It is not a disease जो खत्म हो जाएगी suddenly एकदम से. I hope कभी खत्म हो जाए, but it will be for some years now. And we have to train ourselves physically and mentally. ठीक है ना, कि how to cope with it, how to live with it. Living it does not mean कि living it with a scared कि हम तो बंद ही रहेंगे, कमरे में रहेंगे. Take all the precautions. Initially, when the disease came into being, it was all like कि हाथ साफ होने चाहिए, surfaces साफ होने चाहिए, because हमें physically doctors also are responsible, scientists are also responsible. हमें knowledge नहीं थी, हमें पता नहीं था कि इस बीमारी को कैसे फैलती है. तो हम लोग literally like लोग अपने fruits को भी sanitize कर रहे थे alcohol में, which was like too much. हर चीज sanitize हो रही थी, and सब चीज धुल रही थी. वो ये था कि भाई अब जो सिखाया करो, टेबल साफ करते रहो. Then after some time हमें पता चला, I even remember seeing a video which was done on YouTube कि उन्होंने ना हाथ में डाई लगा दी, and then they are roaming around and seeing कि कहाँ डोर नॉब से कहाँ फैल रहा है. लोगों ने इन्वेंट करे some gadgets की, like इंस्टेड की like डोर को खोलो पेन से, लिफ्ट का बटन दबाओ पेन से, like ना don't touch it and stuff. Then as the time progressed, we thought कि now we learned actually कि this disease is not exactly surface disease, it is a droplet infection. ठीक है ना, कि छींक रहे हो तो ड्रॉपलेट्स आएंगी, दे विल क्रॉस अ डिस्टेंस, एंड आफ्टर दैट डिस्टेंस दे विल सेटल डाउन. तो अगर आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो विदाउट अ मास्क तो देन होगा. ठीक है ना. एंड देन पीपल सेड कि ड्रॉपलेट्स को ढकने के लिए जो है यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग N95 मास्क और स्ट्रॉन्गर मास्क टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग इनसाइड. दैट आल्सो वाज रॉन्ग. सो नाउ वी नो इट इज अ रेस्पिरेटरी एयरबोर्न इन्फेक्शन. सिंपल जो है हवा से फैलता है. ठीक है ना, विच साउंड्स वेरी स्केरी कि सरफेस का तो हम कुछ कर सकते थे, ड्रॉपलेट के लिए भी कुछ कर सकते थे, अब हवा का क्या करें. मतलब हवा तो है सब जगह, यू कांट बी लाइक कैसे प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन दैट स्प्रेड्स बाय एयर. बट ऑलवेज रिमेंबर इन्फेक्शन इज एरोसोल, नॉट इवन एरोसोल, इट इज एयरबोर्न इन्फेक्शन. अगर आप किसी क्लोज स्पेस में हो, आप लोगों को अब लॉकडाउन खत्म होगा, आप लोग ऑफिस जाओगे, डर होगा कि क्या करें, कैसे रहे. ऑलवेज रिमेंबर कि एक तो अपने फेस को प्रोटेक्ट करें. सो इफ यू आर प्रोटेक्टिंग योर नोज एंड माउथ, आई वुड से कि बाकी बॉडी से कहीं से नहीं जा रहा, हाथ से नहीं घुस रहा कोविड. इट इज योर ओनली योर नोज एंड योर माउथ. कवर योर नोज एंड माउथ एज लॉन्ग एज पॉसिबल. अगर आपको लग रहा है कि मुझे मास्क से थोड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे उतारना है, गो टू अ प्लेस विच इज वेल वेंटिलेटेड और ओपन. ऑफिस के बाहर बैल्कनी में खड़े हो गए, कहीं चले गए. ऑलवेज रिमेंबर कि इन एन ओपन स्पेस एयर इतनी जल्दी डिस्पर्स हो जाती है. सपोज लाइक अ पर्सन इज स्मोकिंग, ठीक है ना, बैल्कनी में कोने में स्मोक कर रहा है, आप कोने में दूसरे खड़े हो, आपको उसकी स्मेल भी नहीं आएगी. ठीक है ना, बिकॉज यूर इन एन ओपन स्पेस. सेम वे इफ द पेशेंट इज लाइक नॉट द पेशेंट, इफ द पर्सन इज स्मोकिंग इनसाइड अ रूम, आप दूसरे कोने में भी होगा, आप उसकी स्मेल आ जाएगी, यार स्मोक कर रहा है, मुझे स्मेल आ रही है यहाँ तक. थिंक ऑफ कोविड लाइक दैट कि अगर जो है हम लोग एक क्लोज स्पेस में है तो चाहे स्मेल नहीं आ रही, लेकिन अगर कोई वहां पे है विदाउट अ मास्क बैठा हुआ है एंड यूर इन अ क्लोज स्पेस, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको इन्फेक्शन लग सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ बोथ आर वेयरिंग मास्क, you are well protected. So the infection rate goes down to approximately 30% with one mask. So अगर दोनों में से एक ने लगा रखा है, it goes down by 30%. अगर दो लोगों ने लगा रखा है तो it is cumulative. The risk goes down by 89%. Only 10% हो जाता है. ठीक है ना. अगर डबल मास्क लगा रखा है दोनों ने, it is 2%, less than 2%, 1.8%. तो always encourage people wearing masks. If you can't wear a mask in an open, that is fine. थोड़ा बहुत like wear a loose mask also in the open, that's fine. And be very cautious and look around your environment कि हमें क्या करना है. Like be very cautious कि कोई मास्क नहीं पहन रहा, डांटो मत, टोको मत, लेकिन बोलो आपको डर नहीं लगा कोविड से, अपनी नाक तो ढक लो. Because it is very common. Initially mask used to be like this. जैसे जैसे डर खत्म हो जाता है लोगों का, नाक भर आ जाती है, nose comes out, and remember it is coming out of the nose only. And then after I am seeing very commonly it comes into the chin. वो चिन पे लगा हुआ है मास्क, एंड देन देयर पीपल आर थिंकिंग इससे होगा. सो आई ऑलवेज से कि वेयर इट प्रॉपर्ली. ठीक है ना. इफ यू हैविंग डिफिकल्टी, गो इन द ओपन, थोड़ी देर उतार लो, फिर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. सो विद दिस living with COVID and dealing all the mental issues, thank you Dr Meghna. We had a wonderful
talk. We had some Thanks hiccup for in the having me. Thanks for having me. I would just like to add in one last thing. I would request all the viewers to check out my Instagram and my YouTube, Instagram handle and YouTube channel. Both go by the name The Therapist Mommy, because a lot of what we discussed today I've already put out as videos on my channel in Hindi. So hopefully it will benefit all of you. Thank you so much for having me here, Dr. Dutt. It was really an honor to be here. Thank you so much. Thank you. So what we're going to do is we are going to post the links on the chat, and we're going to pin it so that it's there. You can easily click on it, and do check out the YouTube channel. You will find answers to questions you never thought they were there. So I am a regular subscriber to her channel, and what I come across is like she's answering something, and I thought, yeah, that is something relevant. I never thought that like we should ask some questions like this to her, and it's excellent. And we will. Can they reach you somehow if somebody wants to talk to you personally or something? Yeah, sure. I would like to give out my email ID, meghna3@gmail.com. I think we can put it in the pinned comment. We can put that. That's my official ID that they can email me on. Perfectly fine. Perfectly fine. So with this, thank you and good night, everybody. Thank you. Thank you. Bye-bye.